Now the next question is, write the trigonometric ratios sin alpha, cos alpha, tan alpha, secant alpha and cot alpha in terms of cosecant alpha. Write the trigonometric ratios sin alpha, cos alpha, tan alpha, secant alpha, cot alpha in terms of cosecant alpha. ये मतलब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोसिकेंट में एक्सप्रेस करना है. दो मेथड्स हमारे पास है. एक है सारे फॉर्मूले को यूज करके, जो कि थोड़ा से डिफिकल्ट है. सेकंड मेथड, क्योंकि इन सभी को मुझे कोसिकेंट में एक्सप्रेस करना है, इसको एक्स लेकर भी हम कर सकते हैं, विच इज अ सेकंड मेथड. सो आई फॉलो द सेकंड सॉल्यूशन. सो लेट, क्योंकि इन सभी को मुझे कोसिकेंट में एक्सप्रेस करना है, सो लेट cosecant alpha is equal to x. X means x by 1. Now by definition, what is cosecant alpha? Cosecant alpha is equal to, cosecant का definition क्या है? Hypotenuse by opposite. Take a right angle triangle here. This angle is 90 degrees. This is, क्योंकि यहां पे अल्फा एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो let this angle be alpha. Now you can give the names of these vertices. Say this is A, this is B, this is C. 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज. ये अल्फा का ऑपोजिट है, ये अल्फा का एडजेसेंट है, ये है. Isn't it? So cosecant alpha is equal to x by 1, but cosecant alpha का definition hypotenuse by opposite है. So therefore hypotenuse is equal to x. Hypotenuse का value x है, opposite का value 1 है. This is 1. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको BC स्क्वायर आ जाएगा. So in triangle ABC, that is AB square plus BC square is equal to, AB square plus BC square is equal to AC square. Pythagoras theorem. So AB value is 1. Put it here. यहाँ रख दो. So 1 square plus BC, we don't know. BC square is equal to, AC value is x. So BC square is equal to x square. 1 square है, ये 1 square मतलब 1 ही है. ये 1 को इधर लेके आ जाओ, इस तरफ राइट साइड में. So -1. So BC square is equal to x square. ये 1 square मतलब 1 ही है ना, ये 1 को इधर लेके आओगे तो -1. So BC square is, लेकिन मुझे BC चाहिए, तो यहाँ पे भी रूट लो, रूट, and take here also root. So this square and root gets cancelled. So what do you get? BC is square root of x square minus 1. So BC is equal to square root of x square minus 1. ये है. Now मुझे साइन अल्फा कैलकुलेट करना है. साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. Opposite is 1 by hypotenuse is x. So therefore 1 by, just replace this x by cosecant alpha, क्योंकि x और cosecant alpha दोनों सेम है. x को निकालकर cosecant alpha. So this is sin alpha is equal to 1 by cosecant alpha. Next, cos alpha. Cos alpha का definition क्या है? Cos का definition, that is adjacent side by hypotenuse.
adjacent by hypotenuse. Adjacent is this square root of x square minus 1 by hypotenuse is x. लास्ट में x को रिप्लेस करके आप कोसिकेंट अल्फा लिख दो, x को रिप्लेस करके कोसिकेंट अल्फा. सो यहां कोसिकेंट अल्फा, यहां कोसिकेंट अल्फा, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज कोसिकेंट अल्फा होल स्क्वायर minus 1 by cosecant alpha, that is square root of cosecant square alpha minus 1 by cosecant alpha. Sin alpha has been expressed in terms of cosecant alpha. Cos alpha has been expressed in terms of cosecant alpha. Next, tan alpha. Tan alpha का definition क्या है? That is equal to opposite by hypotenuse. Opposite by adjacent, sorry. Opposite by adjacent. 1 by adjacent is this square root of x square minus 1. So लास्ट में x को निकाल कर आप कोसिकेंट अल्फा लगा दो यहां पे. So that is equal to 1 by square root of कोसिकेंट अल्फा. यहां कोसिकेंट अल्फा रख रहे हो तो कोसिकेंट अल्फा का स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1. कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1. नेक्स्ट, सीकेंट अल्फा. सीकेंट अल्फा का डेफिनेशन क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट. Secant का definition hypotenuse by adjacent. Hypotenuse is x by adjacent is this square root of x square minus 1. x के प्लेस में कोसिकेंट अल्फा रख दो. सो कोसिकेंट अल्फा x के प्लेस में कोसिकेंट अल्फा रखोगे तो हियर कोसिकेंट अल्फा बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट अल्फा होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज कोसिकेंट अल्फा by square root of cosecant square alpha minus 1. Next, cot alpha. Cot alpha is equal to adjacent side by hypotenuse. Adjacent by opposite. Cot alpha का definition है adjacent by opposite. Adjacent is this square root of x square minus 1 by opposite is 1. So 1 डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो. एक्स के प्लेस में आप कोसिकेंट अल्फा लिख दो लास्ट में तो क्या होगा कोसिकेंट अल्फा होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज कोसिकेंट अल्फा होल स्क्वायर मतलब कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1. So here sin alpha, cos alpha, tan alpha, secant alpha and cot alpha, all they have been expressed in terms of cosecant. Okay.